So what is the meaning of a consultant? हम ये कह रहे थे कि जो रेम्यूनरेशन है कंसल्टेंट का वो एग्जेम्प्ट है टैक्स से, लेकिन कंसल्टेंट होता कौन है ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है. फर्स्ट लेट अस लुक एट द मीनिंग ऑफ अ कंसल्टेंट. द एक्सप्रेशन कंसल्टेंट हैज़ बीन डिफाइंड टू मीन, मतलब कंसल्टेंट की डेफिनेशन में ये सब आता है, इसके अलावा और कुछ नहीं आता. एनी इंडिविजुअल, which means what? If there is a firm which has been appointed as a consultant, वो यहाँ पर कवर नहीं होगी. कोई भी इंडिविजुअल जो है वो कवर्ड होगा who is not a citizen of India. This person should not be a citizen of India. If he is a citizen of India, then he is not available, considered for this exemption. Or an individual who, being a citizen of India, is not ordinarily resident in India. यानी या तो इंडिविजुअल हो या फिर, और इंडिविजुअल कौन सा, जो सिटीजन नहीं है. बट अगर आप सिटीजन हैं, in that case you should be a resident, a person who is not ordinarily resident in India, right? और मतलब इसके अलावा कोई और कैटेगरी भी है जो कवर होती है. विच इज दैट कैटेगरी? एनी अदर पर्सन बीइंग अ नॉन रेजिडेंट, कोई भी और व्यक्ति जो एक नॉन रेजिडेंट है, एंगेज्ड बाय द एजेंसी. मतलब इस एजेंसी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई कॉन्ट्रैक्ट था, अब इस एजेंसी ने एक इंडिविजुअल को एंगेज किया, या दे हैव एंगेज एनी अदर पर्सन being a non-resident, and this person who has been engaged is a non-resident. He is engaged by the agency for rendering technical services in India. इसको इसने किस चीज़ के लिए एंगेज किया कि आप इंडिया में आएंगे और यहाँ पर टेक्निकल सर्विसेज जो हैं यू विल रेंडर देम इन इंडिया. इन कनेक्शन विद कौन सी? ऐसा नहीं है हर एक टेक्निकल सर्विसेज कवर्ड है, सिर्फ वो टेक्निकल सर्विसेज जो आप रेंडर कर रहे हैं इन कनेक्शन विद एनी टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम और प्रोजेक्ट इन अकॉर्डेंस विद द अग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द सेड एजेंसी. जो ये टेक्निकल सर्विसेज हैं वो रेंडर होनी चाहिए अंडर अ टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम विच is by virtue of an agreement between this agency and the central government, and such agreement is approved by Additional Secretary, Department of Economic Affairs in the Ministry of Finance, Government of India. In other words, the conditions are what? This could be any other person who is a non-resident. He is engaged by this agency. For what purpose? For rendering technical services in India. These technical services are to be utilized for what? For a technical assistance program. This technical assistance program is by virtue of an agreement between this agency and the central government, and it is approved by this person. When all these conditions are satisfied, then what is going to happen? This person will qualify as a consultant. Now, there is an exemption under section 10, subsection 8b, remuneration to employees of a consultant. Where is this relevant? In the previous example that I told you, there is an employment of any other person. So suppose there is a consultant that this agency has appointed. This consultant has certain employees who come and work on the project. Now the income of a consultant is exempt, but income even of the employee of the consultant is exempt from tax. And not only the employee, even the family members who come along with this employee are exempt from tax. Let us see how this works out.
Following income in case of an employee of a consultant are exempt from tax. The remuneration received by the employee of the consultant referred to in section 10 subsection 8a. Any other income, so whatever remuneration he gets, that is exempt from tax. Any other income which accrues or arises to him outside India, provided that the following conditions are satisfied. जैसे मैंने आपको एक पुराने एग्जाम्पल में एक्सप्लेन किया था, अगर एक एम्प्लॉई इंडिया में काम कर भी रहा है, हो सकता है उसकी इंडिया के बाहर भी कोई इनकम हो. अब जब वो इंडिया में आया, उसकी जो इनकम या रेम्यूनरेशन यहाँ पे थी, उसकी तो एग्जेम्पशन उसको मिल गई यहाँ पर. बट अगर उसने कोई इनकम इंडिया के बाहर अर्न की है, हाउ अबाउट दैट? विल दे ऑल्सो टैक्स इट इन इंडिया? This is where this exemption becomes handy. Any other income which accrues or arises to him outside India, provided that the following conditions are satisfied. Such income is not deemed to accrue or arise in India. मतलब सेक्शन 9 के प्रोविजन लगा के ये इनकम इंडिया में accrue और arise नहीं होना चाहिए. In respect of which such individual is required to pay any income tax to the government of the country of his or its origin. मतलब फर्स्ट कंडीशन है ये इनकम इंडिया में अक्रू और अराइज नहीं होनी चाहिए, राइट? और ये जो इनकम है इन रिस्पेक्ट ऑफ विच, मतलब इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इनकम इस इंडिविजुअल ने अपनी कंट्री, मान लीजिए ये कंट्री ए का रेजिडेंट है, द कंडीशन इज आप यहाँ टैक्स मत दीजिए, प्रोवाइडेड आप यहाँ पर ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं इस इनकम पे. Such employee is either not a citizen of India or a citizen of India is not ordinarily resident of India. मतलब ये एम्प्लॉय कौन होना चाहिए? A, either he is not a citizen of India, or B, a citizen of India who is not ordinarily resident in India. Third, the contract of his service is approved by the prescribed authority before the commencement of his services. हमने ये देखा था कि जो कंसल्टेंट है उसकी सर्विसेज जो हैं एडिशनल सेक्रेटरी के द्वारा अप्रूव होनी चाहिए. इवन फॉर द एम्प्लॉयज ऑफ दिस पर्सन there should be a prior approval for approval of his contract of service by the prescribed authority before the commencement of his service. ऐसे नहीं है कि पर्सन आ गया इंडिया में काम कर रहा है and then you are looking out for an approval for his service. If it is approved beforehand, then only the exemption is available. Now, one more thing is that any family member of such employee accompanying him to India. अब एक कंसल्टेंट सेक्शन 10(8) में क्या था? 10(8), 10(8)A और 10(8)B, ये तीन सेक्शन है. इसमें जो भी इंडिया में आ रहा है जिसका एग्जेम्पशन अवेलेबल है, ऑब्वियसली ही मे नॉट कम अलोन, उनके फैमिली मेंबर्स भी आ सकते हैं. इफ द फैमिली मेंबर्स आर accompanying them to India, even they will enjoy tax exemption for what? For income which accrues or arises outside India, just like in the case of the person whose family member they are. इनकी भी अगर कोई इनकम इंडिया के बाहर अक्रू या अराइज होती है, उसके ऊपर भी एग्जेम्पशन मिलेगी. एंड इज नॉट डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया इफ द फैमिली मेंबर इज रिक्वायर्ड टू पे इनकम टैक्स टू द फॉरेन गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री ऑफ हिज ओरिजिन. सेक्शन 10(9) में इस फैमिली मेंबर की इनकम भी एग्जेम्प्ट होगी, प्रोवाइडेड ये जो भी इनकम उसको मिल रही है वो इंडिया के बाहर अक्रू या अराइज हो रही है, इंडिया में डीम टू अक्रू और अराइज नहीं है, और वो बाहर की कंट्री में जहाँ ये अक्रू और अराइज हो रही है वहाँ पर टैक्स ऑलरेडी पे कर रहा है.